है, which means आपको बहुत सारे वेडिंग इनवाइट्स तो आए ही होंगे। मैं आज आपकी सबसे बड़ी मुश्किल का हल लेकर आई हूँ, एंड दैट्स डिसाइडिंग अ मेकअप लुक। हाय गाइस, मैं हूँ अंकिता और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक फॉर विंटर वेडिंग्स। Before I begin, make sure to subscribe to our BeBeautiful channel if you haven't already and ring the bell icon for further notifications. तो सबसे पहले I like to start by applying a moisturizer. Not just any moisturizer but a hybrid one जो स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा और साथ ही जो स्किन को एक ग्लोइंग लिट फ्रॉम विद इन बेस भी देगा, जैसे कि द लैक्मे लूमी क्रीम। टेक अ कॉइन साइज अमाउंट और इसे अपने फेस पे अच्छे से मसाज करें। ये एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर है विद अ हिंट ऑफ हाइलाइटर जो स्किन को एक ब्यूटीफुल 3D ग्लो देता है। अब एक लुमिनस मॉइस्चराइजर लगाने के बाद बारी आती है टू अप्लाई अ प्राइमर। अब क्योंकि ठंडी का मौसम है तो एक हाइड्रेटिंग प्राइमर चुने फॉर दैट एक्स्ट्रा बूस्ट ऑफ ग्लो। So I would like to suggest this primer. It's the Lakme Absolute Undercover Gel Face Primer. Just take a little bit and apply it all over the face. Infused with vitamin E, ये एक smooth base create करने के साथ साथ आपके स्किन को moisturized और nourished भी रखेगा। अब फाउंडेशन की बात करते हैं। विंटर के दौरान क्योंकि स्किन डल और लैकलस्टर दिखती है, it's important that the foundation has skincare benefits, preferably something that quenches the skin's thirst for hydration. So the foundation that does both give a dewy base plus adds hydration is this one. It's the Lakme Absolute Skin Dew Serum Foundation in the shade Cool Ivory. Dot it all over the face and neck and blend it out with a damp beauty sponge. ये एक सीरम इन फाउंडेशन है जो ड्यूई मीडियम हाई कवरेज फिनिश देता है which lasts up to 24 hours. Then I'll go ahead and conceal and contour the face. I'll use the Lakme 9 to 5 Primer Plus Matte Liquid Concealer in the shade Nude and Cocoa. The shade Cocoa will act as a contour. सबसे पहले मैं lighter shade of concealer लगाऊंगी first under my eyes, on the center of the bridge of the nose, above the cupid's bow. Additionally, I'm also drawing a V shape in between the two eyebrows. फिर मैं darker shade of concealer लूंगी to create shadows on my face. For that, I am going to first apply it on the hairline and create a half moon. फिर cheeks पे लगाऊंगी from the hollows of the cheeks all the way till the sides of the temple. Then for the nose, start from the inner part of the eyebrow all the way down till the tip of the nose. Once you reach the tip, make a V shape on the tip of the nose. For the jawline, start from the edge of the earlobe all the way along the periphery of the jawline. अब बारी आती है blend करने की. I am going to use a damp beauty sponge and will blend it all in. Moving on, for the eyes, I am going to apply a bit of concealer all over my eyelids to help the eyeshadow adhere better. फिर मैं loose powder dust करूंगी to avoid any creasing. For the eye makeup look, I am going to create a two-tone glitter eyeshadow look which is going to go well with all outfits and is ideal for the guest makeup look. तो सबसे पहले मैं अपनी eyes पे transition shade लगाऊंगी from this palette. It's the Lakme Absolute Spotlight Eyeshadow Palette in the shade Berry Martini. I'll start by applying this matte light brown shade using a fluffy brush just above the crease area. Next, I am going to use a liquid eyeshadow क्योंकि winter guest wedding look के लिए ये ideal रहेगा as it gives a soft dewy look to the eyes. So here is the eyeshadow I am using. This is the Lakme Absolute Explore Liquid Eyeshadow in the shade Pink Champagne and Copper Glitter. Take the pink champagne shade and apply it starting from the inner corner of the eyes till the center of the eyes. फिर कॉपर ग्लिटर शेड को लगाए starting from the center of the eyes till the edge of the eyes. Since the formula of these eyeshadows are buildable, you can go over with the glitter shade one more time should you feel like adding some more intensity into the look. अब finally blending brush की मदद से दोनों shades को अच्छे से blend करें so there are no harsh lines. Next, I am going to define my eyes by creating a winged eyeliner. For this, I am using the Lakme Iconic Kajal. I am going to create a basic liner style by simply following the shape of the eyes.
और फिर आउटर एज पे स्मॉल विंग क्रिएट करें। I'll use the same kajal to rim my half of the lower waterline. For the lower eyelid area, I am going to follow the same process as I did for my upper eyes. First, I'll apply the pink champagne shade and then the copper glitter shade. अब इस आई लुक को कंप्लीट करने के लिए I am using my favorite mascara. This is the Lakme Absolute Flutter Secret Dramatic Eyes Mascara in the shade Night Drama. Use the wiggle and swipe technique and your lashes will flutter like never before. With that, the eye look is done. When it comes to guest makeup for weddings, don't underestimate the power of a vibrant blush. इस लुक के लिए मैं आज यूज करने वाली हूँ the Lakme Absolute Face Stylist Blush Duo in the shade Pink Blush. Using a damp beauty sponge, just swirl it into the blush pan और इसे dab करें along the center of the cheeks and blend it outwards towards the sides of the temples. थोड़ा सा bridge of the nose पे भी लगाएं for a sun-kissed effect. Even the simplest makeup for wedding guests is incomplete without lots of highlighter. मेरा सबसे favorite highlighter है the Lakme Absolute Liquid Highlighter in the shade Rose Gold. इसे अपने हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस पे लगाऊंगी और फिंगर्स की मदद से ब्लेंड कर लूंगी। एंड फाइनली आई एम गोइंग टू पेयर दिस लुक विद अ ब्यूटीफुल शेड ऑफ लिपस्टिक। एक बात का ध्यान रखें कि द वेडिंग इज गोइंग टू बी फिल्ड विद अ लॉट ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड टॉकिंग, सो यू नीड अ लिपस्टिक दैट लास्ट एज लॉन्ग। मैं ये लिपस्टिक लगाऊंगी। It's the Lakme Primer Plus Matte Liquid Lip Color in the shade Dusky Rose. This liquid lipstick is formulated with an built-in primer, which means it ensures smooth application. Plus, it has an intense matte color that's transfer-proof and smudge-proof. और सबसे आखिरी स्टेप इन अ वेडिंग गेस्ट शुड बी सीलिंग इन प्लेस विद अ मेकअप सेटिंग स्प्रे। तो मैं यूज करने वाली हूँ द Lakme Absolute Made to Last सेटिंग स्प्रे। इसे बस अच्छे से शेक करें और 6 इंचेस की दूरी से अपने चेहरे पे स्प्रे करें। लेट इट सेट फॉर 10 seconds एंड यू आर गुड टू गो। अब मैं इस लुक को कंप्लीट करूंगी बाय वेयरिंग माय आउटफिट एंड एडिंग सम ज्वेलरी। याद रखें, वेडिंग्स आर all about having fun and making memories. So create a wedding guest makeup look that you are comfortable with so you can enjoy the day while feeling your best. So guys, उम्मीद है you liked my take on this Indian wedding guest makeup look for winter wedding. अगर आपको इनमें से कोई भी products purchase करने हो तो I have added the purchasing links in the description box below. Do check it out. Before leaving, like and share this video and subscribe to our BeBeautiful channel and ring the bell icon so that you are notified every time we post a new video. Bye!